Abigail, can you hear me? हेलो राम भाई। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। ओके। चलो, वहाँ पर किसी को नहीं चाहिए टी है। वहाँ सब व्हाट इज इट, मास्टर से लेजेंड। लेजेंड्स। लेजेंड। लेट्स डू। स्ट्रीम कर रहा हूँ, देख। उस पर स्ट्रीम करेगा? यूट्यूब, यूट्यूब ऑफ पे? कोर्स, एवरीथिंग गोज ऑन टू यूट्यूब। सही है। बाद में भी काम आएगा। दैट विल बी आवर व्हाट, जर्नल। गलत कहाँ जा रहे, we can revive or review ourselves. मेरा जो किस्मत है राम भाई, मैंने दोस्त का लैपटॉप लेके आया, ठीक है। Okay. कल रात में स्ट्रीम किया और उसका चार्जर का खराब हो गया, बताइए। Okay. मेरे दिमाग का पूरा ये हो चुका है, पूरा मतलब क्यों ऐसा हो रहा है पता नहीं। मेरा तो खराब हुआ ही, Okay. लैपटॉप मेरा पूरा ही उड़ा दिया। मेरे दोस्त का भी ले ले लिया भाई, मेरे को अब अच्छा नहीं लग रहा। Oh my दूसरा god. का लेने के बाद ना बहुत रिस्क होता है। क्या हुआ? पावर फ्लक्चुएशन है क्या? क्यों हुआ है? पावर फ्लक्चुएशन की वजह से ही हुआ है। जो मैं फ्लैट पे रहता हूँ ना, हाँ। तो यहाँ पे वो जो पावर है वो अप डाउन होते हैं बहुत। अरे बाप रे। क्या ही मोदी है तो बोलूं। मुमकिन है अब भाई। बताइए, तीन। मोदी नहीं, दीदी है यहाँ पे। कोई भी हो, मोदी है तो मुमकिन है। वो तो ये जो हो गया है कि चेंज करना होगा घर। कोई उपाय नहीं है, 6,000 का झटका लग गया ना झूठ फूट का। नहीं, वारंटी गारंटी कुछ नहीं है क्या? नहीं, 1 साल तो अब हो गया ऑलमोस्ट। ओके। अरे यार, कितना बड़ा नुकसान हो गया। बहुत बड़ा झूठ मूठ का मतलब एक होता नहीं है, बैठे बैठे बिठाए पैसा दो, राइट। वैसा। राइट। है। साइबर को 5% मूव देने में दिन रात से दिन हो गया, अभी तक 5% का मूव नहीं दिया, छी। है। साइबर नहीं, अब सब छोड़ो, खाली बीटीसी में रहो। खाली बीटीसी बीटीसी। भागने वाला है। अरे यार, कितना स्ट्रांग है। कितना स्ट्रांग है। क्वार्टरली देख। व्हाट इज दिस, नेक्स्ट मंथ, मंडे से, कल से इट्स a न्यू क्वार्टर, इट्स a न्यू मंथ, इट्स a न्यू वीक एंड a न्यू डे। हम्म, इट्स a बिग थिंग यार, इट्स a बिग थिंग। एंड लास्ट क्वार्टर हमेशा अच्छा रहता है। हमेशा अच्छा रहता है, इसी को बोलते हैं वो सेंटा रैली बोल के। सेंटा रैली में तो फिर 32,000। बीटीसी 25,000। 32 से 38,000। 32, अच्छा। 37। 32, 32, 32 इज 32। 32 to 37, 32 टू क्योंकि थर्टी मंथली सेवन में FBG अगर इसको 37 पूरी तक जाने के मतलब। बाद अब नीचे नीचे क्यों आएगा? हाँ, 37 के बाद इसको फिर 31 पे सपोर्ट बनाना चाहिए। क्या है? बिटकॉइन है मेरे भाई। क्यों बताइए, नहीं बनाना चाहिए? बना 31 पे अगर सपोर्ट बनाए तो मजा आ जाएगा। तब एंट्री लेंगे ना पूरा पट 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 पट। 31, 31, 31 कुछ नहीं, सीधा 16 आएगा अगर नीचे आए तो। रिट्रेसमेंट नहीं देना चाहते आप उसको? सीधा 69 के पहुंचाना चाहते हो? नहीं, 69 नहीं, 16, 16। नीचे आए तो 16। नहीं मतलब,
जाए तो 16 में 15 14 37, 35, 37. Anything is possible, यार. DXY, don't know what DXY is going to do. पहले गोल्ड देखेंगे. गोल्ड गोल्ड 1826. देख you गोल्ड don't. तो बुलिश है. Okay. लिंक शेयर करिए आपका, बार बार दिखता नहीं है. लिंक कहाँ अभी डाला है मैंने? हाँ, अरे यार वहां पर डाला है मैंने. ओह भाई. उसको हटा देंगे. डिलीट कर सकते हैं ना? डिलीट. हाँ डिलीट कर दिया. चार्जर देख रहा है. चार्जर ओके. नहीं, प्रॉब्लम ये है कि दे कांट स्पीक. तो हम लोग का आवाज उसमें स्ट्रीम हो रहा है क्या? यू तेरा नहीं आएगा, मेरा आएगा शायद. अगर तेरा आए तो भी इट विल बी वेरी लो. एक सेकंड. OBS में लेट मी इंक्रीज डेस्कटॉप वॉइस. डेस्कटॉप वॉइस भी फुल कर दिया. ओके. वहाँ पर पूछो तू चैट में, कैन दे हियर यू बोल के. ओके, एक मिनट. Guys, can you hear Abigail? For those who join now, ये हम 4-5 लोग हैं, 7-8 लोग हैं असल, नॉट 4-5. मैं, निंजा, अविगल, प्रशांत. हाँ, सुन पा रहे वो लोग. ओह गुड. बोलो अविगल तू भी. हम वी ट्रेड ट्रेडिशनल मार्केट्स एंड वहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे टीए का. सो वी थॉट वी विल डू आवर वीकली एनालिसिस फॉर ट्रेडिंग नेक्स्ट वीक. क्रिप्टो भी करते बट दिस थिंग इज बिग फॉर मी. Yeah, maybe if they are watching, let's start with TA a little, and then we can get into. अरे रिकॉर्डिंग नहीं रहेगा. ठीक है, बाद में एक TA का एक फोल्डर बनाएंगे, प्लेलिस्ट, एंड विल डू द एंटायर market structure and video there. And for those who came in now, just for their knowledge, and so that we don't need to say sorry कि हम नहीं लिए, instead of wasting their time, let's do some TA. What do you say, Avigal? कुछ बोलो. yes. और ये इंग्लिश में ही नहीं रहेगा. मेरा हिंदी अच्छा नहीं रहता है, that's why I jump into English just to cover my ass, खुद को बचाने के लिए. बीच में अविगल भी बताएगा, इसका टीए भी अच्छा रहता है. एंड जस्ट फॉर योर नॉलेज, व्हाट इज इट, आई started off with crypto. There's no doubt in it. Undoubtedly I started with crypto. मैं इससे पहले बहुत बार बोला था मैं ये कि व्हाट इज इट, बुल मार्केट में, एक सेकेंड, गुड नाइट, बुल मार्केट में कुत्ता भी पैसा बना लेता है. जब कुत्ता ही बना सकता है, मैं क्यों नहीं बनाया. या डेफिनेटली मैं भी कुछ बनाया था. एंड देन स्लोली आई joined with these guys, Avigal, Kamlesh, yeah, Ninja and all these guys. It's I always say this, उसके मुंह पे भी बोला था मैंने कि it is this idiot who got me into this traditional markets and funding and all that.
और ये ज्ञान पूरा जो भी है, all this knowledge, I would like to give the credit to definitely these guys. Learned a lot from them. um, I don't think I have given anything to them. Maybe just because I'm a little older, I might have given that वो क्या है, थोड़ा ज्ञान दिया होगा फुकड़ में, which costed me nothing. uh, yeah. नहीं, seriously, that's right. मैं क्या दिया आजकल तेरे को? कुछ नहीं यू दिया है। गेव बहुत कुछ दिया भाई, आपने नॉलेज दिया, एक्सपीरियंस दिया। एक्सपीरियंस, हाँ, कुछ मेरा कुछ नहीं गया, it did not cost me anything though. Okay, if we have to look into market structure, सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्या है? मी बीइंग ए ट्रेडर और वी बीइंग ट्रेडर्स, I would say market structure is the most important thing. गॉड, It is God. स्टार्टिंग गॉड। जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हाँ, हैं वो लोग बोलते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, एफ ए इज एवरीथिंग बोल के, और जो टीए करता है वो बोलेगा कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, उसमें कुछ भी नहीं है, टीए इज एवरीथिंग। दोनों इम्पोर्टेंट है। दोनों इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो डाउट इन इट। एनीथिंग विच इज गिविंग यू मनी और एनीथिंग विच इज मेकिंग यू प्रॉफिट, यू जस्ट स्टिक टू दैट। मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ, अगर तुम्हें एफ ए पैसा दे रहा है तो स्टिक टू दैट, अगर तुम्हें टी ए पैसा दे रहा है तो स्टिक टू दैट। और टी ए में भी इफ़ यू गेट इनटू यूट्यूब, क्या है, तुम्हें हज़ारों वीडियो, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ आवर्स ऑफ वीडियो मिलेंगे। आई वुड से ईच वन ऑफ दैट इज राइट, कुछ भी गलत नहीं है, एंड नो वन इज रॉन्ग, नो वन इज रॉन्ग, जस्ट दैट यू स्टिक टू वन। एक मेथड पकड़ो, उसको पकड़ के रखो। और देख, इफ वी लुक इनटू बिटकॉइन, क्या है, दिस वाज आवर मार्च डंप, इफ यू रिमेंबर दिस कोविड डंप। कोविड, जब कोविड आया था, लेट मी जस्ट टेक आउट ऑल दिस, इट वुड बी बेटर। ओके, दिस वाज द फर्स्ट साइकिल, देन जस्ट अबाउट टू स्टार्ट द सेकंड साइकिल, ये स्टार्ट होने से पहले डंप हुआ है, राइट? If we just have to draw a line at this part, ये कहाँ तक drop हुआ है? Now you get into the weekly part, ये कहाँ तक drop हुआ है? Do you see anything here onto the left? Like, you always look to the left. If this left has broken, then you look to the next recent left. You always look to the recent left. That's important in TA. ये drop हुआ है कहाँ तक? First of all, drop हुआ है because of COVID. Now that's FA. FA क्या बोलता है, और फंडामेंटल एनालिसिस और फंक्शनल एनालिसिस जो है वो हर जगह रहता है, एंड वो क्या बोलता है कि इफ दिस हैपेंस देन दिस हैपेंस, बट व्हाट डज टीए से? इफ दिस हैपेंड, राइट, देन दिस हैपेंस अप टू वेयर? अगर मेरा बात समझ में आए तो फंडामेंटल एनालिसिस तुम्हें, हाँ, मार्केट अच्छा नहीं है तो गिरेगा बोल के बोलेगा, मगर टीए ये कहां तक गिर सकता है बोल के बोलता है। दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट इज द रीजन व्हाई आई स्टिक टू टीए। टीए इज एवरीथिंग फॉर मी। आज तक जितना भी पैसे बना है, एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैं बाहर रहता हूँ, आई हैव माई ओन, क्या है, प्रीटी डिसेंट नौकरी है मेरा, बीवी बच्चे, अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैं खाली 1 या 2 दिन ट्रेड करता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, और वो ही काफ़ी है मेरे को, राइट? दैट्स मोर देन इनफ। टीए देख के, लाइक, इसमें जहाँ तक जा रहा है, इफ इट इज कमिंग नाउ in this week, this is a weekly analysis, now this is a 4 to 5 weeks, 5 candles बोलते 5 weeks है, that's close to 1.5 month. 1.5 month, ये 1 month, ये 1 महीना जो है, ये वेट किया है मैंने, मुझे पता नहीं क्या होता है बोल के, आई जस्ट वॉन्टेड टू सी। यहाँ तक आने के बाद एक छोटी सी एंट्री लिया है मैंने, राइट, बट इट डिड नॉट होल्ड, सो आई गॉट आउट बिकॉज ऑफ वॉट? बिकॉज ऑफ द TA. Now those who only look into FA, they have no idea where it is going to drop. यहाँ तक आने के बाद, instead of looking into Bitcoin, if you guys look into the oil thing, yeah, this is probably the best example I can give you guys.
ऑयल जब कोविड मार्च 6 का, वो चार्ट नहीं है मेरे पास, मार्च 6 का चार्ट अगर किसी के पास है तो खोल के देखना, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट नाउ, इट वेंट टू -$41। देख आज क्या है, 1 लीटर पेट्रोल इंडिया में 100-150 में मिलता होगा। इमेजिन इफ कंपनी पेस यू टू टेक पेट्रोल, और पेट्रोल पंप वाला तेरे को 150, 200, 300 दे रहा है, नहीं 400 दे रहा है 1 लीटर पेट्रोल लेके जाने के लिए। हाउ वुड दैट बी? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड हियर। बोलते 1-2 लीटर लेना नहीं, इफ यू कैन टेक से 1,000 gallons ऑफ पेट्रोल अवे फ्रॉम देम, वो क्या है, पेट्रोल वहाँ से मिडल ईस्ट में दे जस्ट टेक इट आउट एंड यू कांट स्टॉप इट। वो टैप जैसा नहीं रहता है, जब चाहे तब खोलो, जब चाहे तब बंद कर ले, वैसा नहीं रहता है। Once it is open, it has to run. That's it. Now that was being sent out in containers to rest of the world. अब rest of the world में आने के बाद I know some people in America who literally took big बड़े बड़े warehouses लेके उसमें dump कर लिया सारे पेट्रोल, and they were paid for doing that. Right? See, that's FA. Fundamental analysis will tell you क्या हो सकता है. That's like a crash. Now उसके बाद क्या होगा वो किसी को पता नहीं था. That's why none of them took any gamble and putting money in. The minute government started releasing out funds to everyone into their bank accounts, और इंडिया में नहीं हुआ है, मगर यहाँ पर जो भी जिसको भी धंधा है, जिसको भी नौकरी है, वी वर ऑल कम्प्लीटली लॉकडाउन, कोई घर से बाहर नहीं आ रहे थे। हमारे अकाउंट में एक महीने में 4,000, 5,000, 7,000 ऐसा लाइक $7,000 वो हमारे अकाउंट्स में डाल दिए, राइट? इट्स एंड ऑल दैट मनी हैड नो प्लेस टू गो। उसके लिए when all that money came in, this started moving up, and it started moving up from a particular point, from this point। और ये लाइन जो है, if you see that, does this make any sense? हमारे को ये ऑर्डर ब्लॉक है। Now let's not get into that. That's a different case. वो सब देखने से पहले, right? We must understand that each and every candle has a story. Exactly the same sentence we used last Friday. कब बात कर रहे थे अवगिल भाई? और वीकलेस कैंडल नहीं, ईच कैंडल एक कहानी है। कहानी है, और आपने बताया था कि वीक ऑलवेज डू द डैमेज एंड बॉडी बॉडी के अंदर जो होता है वही होता है। यप, ये जो है, लाइक यू लुक इनटू एनी ऑफ दिस कैंडल, it has 3 parts, right? If you can understand a candle, you can be a good trader. That is market structure. Each candle is a market structure. And if you look into any of this candle, what is that you see? You see a top wick, a bottom wick, and a body, right? If it is a green candle, you call this is where the market has started, 1.109, whatever that price is on the top. Now the bottom one will be if it is a green candle, this is where the market has started, and if you look at the top of the body, that's where the market has closed. But before that, and before the market has closed, it has done 2 other things. What is it? Let's take these 2 candles away. What did it do? It came down, right, which is my blue line, and also went up. That means every candle has 3 parts: a top wick, a bottom wick, and the body, right? There will definitely be an outlier. कभी कहीं एक विकलेस कैंडल रहता है, और मेरे को वो बहुत डर लगता है वो विकलेस कैंडल देखे तो। that's है तो बीटीसी में जी, बीटीसी में है, बीटी हर जगह रहेगा, yeah, but very few. And when you have those very few, that's, you call them as outlier, right? And also, and what if it is a weekly candle? what if it is a weekly candle?
हाँ, yeah, if it is a तब तो week, ज्यादा श्योरिटी है. yeah, monthly, yeah, that's right. Okay, we'll go there. We'll go there. Um, वीकलेस जब वीक नए रहता है, मे बी इन द फ्यूचर वो वीकली होने दो, मंथली मंथली थोड़ा थोड़ा चांसेस, आई मीन चांस तो रहता ही है, मगर वो होने में कुछ टाइम लगेगा. इट कुड टेक अप टू 12 मंथ्स, इट कुड बी अप टू 18 मंथ्स. तब तक हम डिसीजन नहीं लेके नहीं बैठ सकते हैं. वी कैन नॉट वेट, सिट असाइड without trading that particular market. So that's why I try not to look into a monthly wickless candle. जिस candle में wick नहीं है, and if that is a monthly candle, I try not to look into that until it comes closer to that. अगर weekly है, अगर daily है, तो I'll give a very close eye to this. Okay, and weekly. हाँ. देख यार, इंडिया की बिगेस्ट स्टॉक मार्केट की वेल कौन है? इफ आई आस्क यू दैट, राइट? आशीष कचोलिया, अरशद मेहता, राइट? ओके, ही माइट बी अ स्कैमर, लेट्स नॉट टॉक अबाउट हिम. रमेश दमानी, राकेश झुंझुनवाला, राइट? Stacy Bucks, one of the best trader whom I saw on YouTube. ICT, right? What do they? ICT has given out maybe 100 different models, 100 different methods. हर मॉडल में, हर मेथड में वो क्या बोलता है? ICT is so famous, right? Some people hate him, some people love him. Right? Stacy Bucks भी वही है, झुंझुनवाला वही है. All these people, let it be whatever model they are following, they will definitely look into the market structure. ICT का displacement जो है, if it is near breakup structure, वो displacement breakup structure दे के देता है, बोलता है, right? What is that breakup structure? That breakup structure is nothing but something like this. यहाँ तक एक high बनाया, then it broke this high and went up. That is breakup structure. Now breakup structure is nothing but market structure. Nothing but market structure. It's probably one of the most important topic of market structure is technical analysis. This has to be your first and foremost thing what you have to look into this. Only if you master this, right? Only if you master this, everything else will fall in line. Everything else will come together. If you don't master your market structure, trust me, बाकी सारे जो भी तुम लोग कर रहे हो, वो सब बेकार है. In my opinion, that this can be different, right? And when I say that, True. when I say that, it's definitely not what is it? What Rohit, what लाइबल करता है, जरूरी नहीं कि लाइबल है सब पे. हाँ, ये बोलना चाह रहे हो? Yeah, exactly. वो लोग जो कर रहे हैं, that is also right. But for me, this is the most important one. ये मार्केट स्ट्रक्चर होने के बाद ही, right? All those indicators, whatever जो भी इंटरनेट में आपको SMAs होने दो, EMAs होने दो, FEBs होने दो, MACD होने दो, RSI होने दो, what else? You have Elliott waves बोलते हैं, कोई आके बोलता है Ichimoku cloud बोल के, right? What are they? All those indicators कहाँ से काम करेंगे until unless you get your market structure right. If your 9 EMA or 21 EMA, क्या बोलते हैं वो लोग कि if your candle hits that 9 EMA, then it might go up वहाँ से बोल के. What is that? वो EMA होने दो, SMA होने दो. What are they? Each and every indicator what you see in TradingView is a lagging indicator. When you're saying that, एक lagging indicator को base करके you're going to predict the future बोले तो that itself is wrong, right? You get your market structure right, and if it is at your market structures whatever that concept के पास है तो then that indicator will work. मेरे चार्ट में कभी भी तुम्हें what is it, एक इंडिकेटर नहीं दिखाई देगा. At the most you might see क्या है, MACD मिलेगा, right? That is also if you see anything. अगर है तो भी I might be having PO3 होगा, power of 3, right?
एंड दैट पावर ऑफ 3 और एस सेशंस का जो इंडिकेटर है वो कभी वो रहता है, राइट? और देर इज अनदर इंडिकेटर which gives you the previous day high, previous week's high, previous month's high. वो those are not indicators, they are just lines. That's an information. I use that so that I don't need to draw a line. कभी कभी what is that, I might fall a bit lazy. I might use that, right? Now you don't need an indicator, or I'm not saying I will never ever use them. If at all I have to use them, I'll use it in confluence with the market structure. I can't. ये मैं कितने वीडियोस देखा है मैंने 1000 वीडियोस देखे होंगे, मैं 10,000 वीडियोस देखे होंगे मार्केट स्ट्रक्चर पे, बट फॉर मी वो फोटोन ट्रेडिंग वाला वीडियो जो ये लोग ही दिए थे मेरे को, मेरा जिंदगी खत्म बर्बाद कर दिए ये लोग मेरा ये देखे. There was a stage when I fell in love with this trading so much कि मैं नौकरी भी छोड़ दिया. मैं 1 महीने के लिए नौकरी छोड़ दिया. मैं लाइक डे ट्रेड कर रहा था, हर 5 मिनट पे, हर 15 मिनट पे ट्रेड कर रहा था, वो भी मार्केट स्ट्रक्चर देख के ही. बट उसके बाद आई रियलाइज कि आई वाज स्ट्रेसिंग टू मच. मेरा लाइक कुछ ज़्यादा ही बहुत स्ट्रेस ले रहा था मैं. थॉट इट वाज वे टू मच फॉर मी. And then that's when I went for swing trading, right? Now remember this point, swing trade. Avigal hates swing trade. I love swing trade. Avigal 5 मिनट की चार्ट पे, 15 मिनट की चार्ट पे उसको अच्छा लगता है, right? This is a very very important thing for those who do not know market structure, for those who are listening now, right? ये 5 मिनट का चार्ट, ये 1 मिनट का चार्ट, ये 15 मिनट का चार्ट बहुत एक्साइटमेंट देता है यार. It makes you feel like you are making money. It makes you feel like जिसको भी सिगरेट पीने का आदत है, वो 4-5 घंटे के बाद जब सिगरेट पीते हो ना तुम लोग, वो नशा जो आता है, वो मज़ा जो आता है उसमें, वैसा लगता है. And this is only for those who understand this, right? You don't get into the habit of that 5-minute, 15-minute chart. You try and stay up to 4 hours. अगर 4 hours का देखे तो एक दिन में instead of a day, let's say 2 कैंडल बनने के लिए तुम्हें 8 घंटा बैठना पड़ता है. If you're not having that kind of patience, I think it's better you do something else instead of trading, right? All right, agar if that is too much to start off with, you can start with 1 hour एक घंटे के कैंडल पे you do the trade. Hey, what the fuck, it is upgraded, why do I need that? Okay, 1 घंटा, like, and 8 hours is 8 candles there, right? That's also still good. And isme, if you look into this, right, why am I saying so much? Lines draw करना कोई भी draw कर सकता है यार. जिसको भी माउस पकड़ना आता है ना, वो lines draw कर ले सकते हैं, right? You don't really need any what do you say, any lines to be driven to start trade. ये weekly chart है, ये देखे तो क्या लग रहा है तुम्हें, right? Can't you draw some important line? If you see this, what is this? ये यहाँ तक आया, then came down. So that means it is trying to take support there. Then ऊपर गया, then नीचे आया. It took support here. This is a weekly chart. Remember that. इसमें अगर 10 candles है तो 10 weeks candle है. 10 weeks support लिया है. What does that mean? It can either break down from here or go up from here, right? So can't you just say this is an important area, an important zone, right? अगर इसको यहाँ पर लगाए तो now went up, came down, went up, came down, broken down, went up, retested it, came down. ये देख, simple chart है. Now when someone says BTC is bullish today, what does that mean? That doesn't mean that it is going to go all the way up to 100K. It means that it is an educated guess. ये ट्रेडिंग जो है इसको गैम्बलिंग नक को बनाओ. ये 1 मिनट की चार्ट देख के, ये 5 मिनट की चार्ट देख के, या
मैं 10-15 दिन में मैं $1000 बनाऊंगा, मैं $10,000 बनाऊंगा, मैं बहुत जल्दी बहुत रिच बनूंगा बोल के नको सोचो. When someone says that BTC is bullish, just open the chart, go to the higher time frame. ये वीकली चार्ट है, इसमें क्या लाइन ड्रॉ किया है मैंने? ये लाइन ड्रॉ करने के लिए तुम्हें कोई कोर्स लेना है क्या? डू यू नीड टू स्पेंड मनी टू टेक एनी कोर्स? Isn't this common sense? This is what market structure is. This is market structure. What is this? Went up, came down, retested this. That's support है. ये zone भी बोलते हैं, playing in the zone or trading in the zone. Went up, came down, took support. Went up, came down, took support. Broken down, went up, retested it. वो एक जो green candle है देख, right? That's a very 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 important candle. आप लोग आने से पहले अविगल बोल रहा था, ए अरे यार मेरा ट्रेडिंग व्यू को क्या हो गया? Why is it playing up? कोई हैक कर रहे हो क्या भाई? एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे हैक करे तो भी कुछ नहीं मिलेगा. मैं 100, 150, 200, 1000, 2000 जो भी लेके जाता हूँ ना ट्रेड के लिए, उसी रात निकाल देता हूँ मैं एक्सचेंज से भी. आई नेवर कीप माई मनी एनीवेयर. ओके, दैट्स समथिंग टू टॉक अबाउट लेटर. ये क्या है? ये एक ग्रीन कैंडल है. ये ग्रीन कैंडल क्या है? राइट, इसको कोई ऑर्डर ब्लॉक बोलता है. राइट, एनीवन कैन गिव एनी नेम, इसको जो ब्लॉक बोलना है बोल ले. बट ये ऑर्डर ब्लॉक से पहले, ये ऑर्डर ब्लॉक बनने से पहले हमें क्या था? हमारे पास ये लाइन था. ये लाइन तक आके रीटेस्ट करके नीचे आया, फिर ऊपर गया, रीटेस्ट करके नीचे आया, एंड फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है. दैट्स 31,000. दैट्स योर मार्केट स्ट्रक्चर. व्हाट एल्स यू नीड? What else you need? You don't need anything else. You don't need anything else, right? And isko dekho, you will get all this anywhere. But I'll try to put it very very simple. ये क्या दिख रहा है यहाँ पर? If you have to draw some lines, let's draw more lines here. Let's try to say that Ram Bhai is a very good technical analyst बोल के. यहाँ से यहाँ गया, then यहाँ आया, then यहाँ गया, then यहाँ आया, then यहाँ गया, then this is the lowest point, right? Or maybe okay, you can take this one, then यहाँ गया. What is this? यहाँ से can you say that this is going to happen? Probably. Who knows? मुझे तो पता नहीं भाई. I can just say that this might probably happen. Now what is that probably बोले तो? That means it is an educated guess. That's what trading is. Keep it as an educated guess. Don't take it as what do you say, for prediction जैसा नको देखो इसको, forecast जैसा नको देखो. अगर forecast ही करना है तो हमें और तुम्हें क्यों? ये बाबा लोग हैं ना अपने इंडिया में, हजारों बाबा लोग हैं. Let it be a Hindu बाबा और a Muslim बाबा. I'm not trying to be what is it, कोई एक रिलीजन को नहीं बोल रहा हूँ. हर उसमें बाबा लोग हैं. क्यों बोलते हो? हम जैसे छूतिए लोग बहुत है, इसलिए वो बाबा लोग स्मार्ट बन के बैठे हैं. नाउ व्हाट वाज दैट पर्टिकुलर चार्ट, वो लाइंस, डिड यू सी दैट इट वेंट फ्रॉम ए सर्टेन लो, यहाँ तक आके लो बना के ऊपर गया, देन नीचे आया, देन ऊपर गया, देन नीचे आया. दैट मीन्स इट वाज ट्राइंग टू मेक ए हायर हाई एंड ए हायर लो. राइट, नाउ लेट्स ट्राई टू कीप इट सिंपल. लो, ए हाई, a higher low, नहीं, a lower high and a higher high, a lower high and a higher high, higher low. क्या बोल रहा हूँ यार, क्या हो गया है? right, higher high higher low. yeah, there is a possibility. मैं इतना कभी नहीं बोला है ना, maybe that's why. okay, a higher high, a higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, as simple as that. Now what is the purpose of this high? It's the main purpose of this high in a market is to make a lower low. यहाँ से, when I say that, okay, this might be a little confusing, but listen to me. यहाँ से, this has to, the purpose of this or the main, इसका काम जो है, it has to break this particular area and come down.
that's that has to be its job. But did it do that? No. That means this is a protected low. ये लो को, ये हाई जो है, ये ब्रेक नहीं किया है, राइट? इट हैज मेड ए हायर लो. अब यहां तक आने के बाद what is the purpose of this low? This low is to break this high. Okay, let's draw another line here. The purpose of this low is to break this high, right? Did it do that? Yes, it has definitely did that. It came to this part, right? That means it has broken. Did it work? That means this is a weak high. कोई भी मार्केट में कहीं पर भी जाके देखो, a high will either be broken or not broken. Or to put it in simple terms, मार्केट में तीन ही स्टेप हो सकता है. It can either go up or down or sideways. Now, bloody hell. अभी के लिए टेलीग्राम लैपटॉप पे स्टार्ट किए तो आई डोंट नो व्हाई मेरा थोड़ा हैंग हो रहा है. दिस इज एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड कंप्यूटर. तुम्हें पता है, आई स्पेंट लाइक मोर देन $2,000 टू बाय दिस. हाँ, yeah, maybe this will give some inspiration for those who are listening. I bought this laptop only from the profits of Dow Jones and TRB. TRB को short किया था मैंने last week or the week before that? Last week. नहीं, the week before that. Last week. Okay. हाँ, last week. नहीं, last Thursday trade नहीं किया है मैंने. The week before that, man. Before when he TRB pumped after that. बहुत पंप होने के बाद शॉर्ट किया है. The week before that actually. Yeah. And then got this one. If that gives any kind of inspiration for you, you take it. There is definitely money in this. In this बोले तो not just in BTC. BTC क्या है यार? It is not even bigger than a mosquito in front of an elephant. एक दिन का, this is fact है ये. सुन ले अच्छी तरह से. अगर तुम लोगों को कोई बोलता है कि BTC फ्यूचर का करेंसी है, वर्ल्ड करेंसी होएगा, दुनिया को बदल देगा बोल के बोले तो मेरे सामने लेके आज चप्पल लेके मारता हूँ मस्त साले को. इट्स व्हाट इज इट? इट्स पीनट. ये पल्ली बटानी है. ये कुछ भी नहीं है. नॉट इवन अ मच्छर इन फ्रंट ऑफ एन एलिफेंट. हाथी के सामने मच्छर भी नहीं है ये. आई टेल यू, एक दिन में गोल्ड का ट्रेड, right, let it be physical gold or paper gold, we are not going to get into that. गोल्ड का ट्रेड एक दिन में $300 बिलियन होता है. पूरा एंटायर क्रिप्टो मार्केट का मार्केट कैप क्या है? 100 बिलियन. ओ 1 ट्रिलियन बोल के वहां पर दिखाई देगा कहाँ कॉइन मार्केट कैप में. दैट्स नॉट राइट. दैट इज नॉट राइट. द एक्चुअल डॉलर, नॉट द inflated values or not the 10x 20x leverage use करके जो USDT से ट्रेड करते हैं, that is not the actual volume or this thing. The actual volume would never ever be more, or at least आजकल तो would not be more than 100 billion. entire क्रिप्टो की मार्केट कैप. एक दिन में गोल्ड का ट्रेड 300 बिलियन होता है. बिलियन, 1 बिलियन इज what is it? 1 बिलियन अपना 100 करोड़. 100 करोड़ है 1 बिलियन इंडियन में बोलना है तो. नाउ $300 बिलियन. एक दिन का 4x ट्रेड की, ऑल 4x की जो ट्रेड होता है, डू यू नो दैट्स मोर देन $2 to 3 ट्रिलियन. कितने जीरोस रहते हैं वो भी पता नहीं मुझे. उतना बड़ा नंबर है वो, राइट? सी, I am here to trade. I am not here to defend a particular asset or make a particular asset low or high, right? I am here to trade. And I am here to trade and make as much money as possible and get out. As simple as that. इसमें पैसे है. And you can only make money if you understand and learn the market structure
I can't stress the importance of this one as much. I can't. It's I can't stress enough the importance of this one. See, the best example. 3-4 दिन पहले हम ये देख रहे थे. What is this? This is BTC, right? On the daily. 23rd September वाला. Yeah, this is exactly what we were looking. 23rd September. इसका high and low देखो. यहाँ पर 2 line मारो, right? The high was 26,583 and the low, I'm not talking about the VIX, forget about the VIX, and the low was 26,577. $6 यार, इसकी price movement $6 हुआ है, right? Can it be $6 anywhere? That itself says that this is not a big thing. Okay, don't give too much importance to it. जब पैसे बन रहा है, बना ले, निकल जा. As simple as that. Now, coming back to the market structure. Right. Okay. Euro USD. Let's get into this one monthly chart पे जाके देखेंगे. The same power of 3. What is power of 3? Right. Once again, you have, this is where the market started. This is where the market ended, right? Forget about the price. We are only worried about what happened. Now we want to understand how that happened and what is that we can take out from that, right? This is the not the body, the candle high. I'll make it a different color instead of a red डर लगता है मुझे. And then this is the low. That was the lowest in that month. It went to. Let's do it again. Right. Now, power of 3. I was introduced to this by ICT. ICT का वीडियो देखा था. कौन दिया था मेरे को? I think it was Carrie. I think it was Carrie or Avigal. I can't remember. Yeah, I would definitely say Avigal ruined my life. मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिया इन्हें. I'll say that again. Okay. ये जो है ICT का power of 3. What is it? Any candle, as like we just talked now, key, it will be having a wick, a bottom wick, a top wick, and a body. Or, in other words, you can say a candle starts at a place, comes down, goes up, comes down again, and ends at a place. Right? Now, can you relate this to this one? Your ये वाला नीचे वाला black line जो है वो ये है, this particular line. ऊपर वाला black line जो है वो ये है, and these two wicks are this line. That is the power, the 3 things what can happen. Now, when we say this on a monthly chart, if it is looking like this, if we can go into weekly, एक monthly chart में कितने candles रह सकता है? At the most 4, sometimes 5, because the month might have finished in the middle of the week of the previous month, or the month might have finished in the middle of the week of the next month. So 4 or 5 रहेगा. यहाँ पर 5 दिख रहा है. What happened? ये यहाँ कहीं start हुआ है, right? Then came down, went up, came down, came below, almost to where it started, and then went up and closed it, right? This is what happened. If you look at it in the daily, right, it gives you a better picture. This is the reason why I say every candle has a story to say. ये monthly candle को देखे तो इसमें story है, एक लंबी कहानी है, एक beautiful story है. ये एक candle कितने लोगों को बर्बाद कर दिया होगा, कितने लोगों को अमीर बनाया होगा, right? This single candle might have given lots and lots of traders को funded challenges pass करवाया होगा, right? Not lots of, only 2% pass होते हैं, 98% fail होते हैं कहते, right? और वो 2% में से हमारा दोस्त एक last week pass हुआ है, मेरा और अविगल का दोस्त. I don't know if he wants to be known. He is from our group. Yep. You all know him. And he did great. Okay. है कि नहीं? That's his greatness. It's up to him if he wants to come out and say वो अपना messages delete किया है, जो हम congrats बोल के डाले थे वो delete किया है. That's why I'm not taking his name. It's up to him. If he doesn't want to be known, then he needs privacy probably.
That's okay. What is this? हाँ, ये candle. Now let's take out the body. Let's get rid of the body. क्या है? We were at on the daily part, right? Now this daily, you look at that beautiful thing. This is the wick. यहाँ कहीं स्टार्ट हुआ है, ऊपर गया, नहीं पहले नीचे आया, यहाँ स्टार्ट हुआ है, पहले नीचे आया, then went up, then came down and closed here. You look at it on the daily. ये क्यों मैं why is it saying this? मेरा प्रीमियम है यार, ये देख अब आ गया, नहीं ये पूरा क्लोज हुआ है. What the hell? ये लास्ट वीक से ट्रेडिंग व्यू का कुछ चक्कर चल रहा है. ओके, नाउ इफ यू लुक एट दिस, राइट, दिस इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी. If you want to go, if you want to trade this particular area, or if you had to trade last month on Euro USD, this is what happened, right? This is the entire story of Euro USD last month, or this particular any asset, it doesn't really matter. क्या हुआ है, यहाँ कहीं शुरू हुआ है, then came down and then went up. How do you know if it is going to come down or go up? No one knows it. अगर कोई बोलता है उसको पता है बोले तो, well, then he is God. I would definitely like to meet him. We want to learn more from him. We love learning, right? But for us, we try to say it as a swing structure and a substructure. ये दो नोट करना. Swing structure, substructure, और कभी कभी लोग कभी कभी नहीं, lot of people say it as internal structure also, right? So, names doesn't matter, yeah. The concept is the thing which matters. पहले structure यहाँ पर, ये एक structure, it doesn't matter whatever it is. We will get into that. We'll look into that now very soon, right? यहाँ पर कुछ structure बन के इसको let us assume that this is the high, right? And that high got broken and went up. That itself says that there is a break in the structure. इसको break up structure बोलते हैं. Now, this high, when that is broken, there will be a retest. No matter what asset it is, there will be retest. If there is no retest, you don't need to trade it. You look for another asset. As simple as that, right? यहाँ पर retest नहीं मिला है ना बोले तो, yeah, of course, but it has given a retest here, right? If you think this is your structure, right? It has given a retest. It has come back. It doesn't need to come all the way down here. It doesn't need to. That's not the rule. Rule is it has to retest. Now, जिसको भी FOMO होता है वो भी एंट्री ले सकता है. This is me. मेरे को बहुत FOMO होता है. मुझसे ज़्यादा दुनिया में शायद किसी को भी FOMO नहीं रहता होगा. बहुत FOMO होता है. So what I do is I take a small entry here. अगर मेरे को $100 लगाना है तो, और ₹100 लगाना है तो मैं इधर ₹10 ही लगाता हूँ, right? Because I don't know if it is going to come down here or is it going to go off from here. मैं इधर ₹10 लगाता हूँ. That means only maybe 10%. इससे नीचे आए तो I'll put another $20 here. तो मेरा पोजीशन साइजिंग जो है, see, as a trader, मार्केट स्ट्रक्चर जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट, टेक्निकल एनालिसिस जितना इंपॉर्टेंस है उतना ही इंपॉर्टेंट तेरा पोजीशन साइजिंग है एंड योर रिस्क मैनेजमेंट है. रिस्क, अब गांड में जितना दम है उतना रिस्क ले सकते हो. ये 2%, 3%, 4% ऐसा कोई भी रूल नहीं है. एटलीस्ट मैं तो वो रूल फॉलो नहीं करता हूँ. मेरा रिस्क मैनेजमेंट जिसका जितना है, हाँ एग्जैक्टली, जिसकी गांड में जितना दम है उतना उसका रिस्क मैनेजमेंट है. एज सिंपल एज दैट. इफ यू कैन अफोर्ड टू लूज इट दैट्स फाइन. क्यों बोल रहा हूँ बोल तो, आई डिड दिस. मैं वो फंडेड चैलेंज लिए, जब मैं लिया, मैं आई हैव गॉट अ फ्यू फंडेड अकाउंट्स टू. हाँ ये भी अगेन इट इज दिस सेम गाय. यही अविगली इन्हीं लगाया मेरे को. हवा में जा रहे सो कांटे को गान को लगाना बोलते उसी को बोलते हैं. मैं इसको पकड़ लिया मैंने. I unnecessarily joined this group and I unnecessarily no. He's good. Thank you, Abigail. कुछ ज़्यादा ही गाली हो रहा है आपको. It's actually
Because of him I learned a lot. And ये funded का होने दो, he gave me a funded challenge. He gave me his reference code to take that funded account on a 50% one. That was my first one and I cleared that. Okay, let's not get there. वो जब funded thank you Avigal once again, sorry मैं मजाक कर रहा था. वो जो अरे कोई दिक्कत नहीं. उसमें क्या है ना, funded में you can have a certain dollar or percentage of drawdown per day, right? उससे मेरे को कुछ ज़्यादा ही लफड़ा, I mean problem हुआ है. So instead of like putting all the money, I started using it, and that credit goes to Abigail again. वो क्या है, इधर 10% लगाया, right? उससे नीचे आया तो और 10% लगाया. मेरा stop loss जो है, that was always here. Okay, coming back onto the what is this? We'll talk about वो हम 4-5 लोग मिलके ये एक सीरीज बनाएंगे. We'll make it as a sequential wise, लगा के यहीं पर we'll put them as a playlist. Yeah, but let's give this introduction. Let's get this thing done. Then we have to do the weekly analysis. Right, now what? यहाँ तक आके ऊपर गया, that is a higher low, right? It's again the same thing. The minute it has broken this, right? If it is an internal structure, if it is a substructure, right, you can call it as a change of structure. Once it has given you a double confirmation, you can take it as break of structure when it closes with the body, and then यहाँ से enter कर सकते हैं. Some people or really professional traders, they take a double confirmation. Now वो double confirmation क्या है, right? Market, okay, यहाँ पर देखे तो market just kept falling down, right? That's okay. This one, this is a good example, right? Don't know when it happened. Now market just kept falling down from here. It made a series of higher lows, lower lows and lower highs. Okay, in a bullish market, you will get a series, a sequence, a continuous higher highs and higher lows. In a bear market, you get a series of lower lows and lower highs, right? Now, यहाँ तक आने के बाद, how do you know that it's going to go up from here? No one knows. But if you look at the structure, यहाँ तक आने के बाद, it has made, what is this? This is a break of structure. We call it as a break of structure because it has, ये thumb rule नहीं है, कोई भी कुछ भी follow कर सकती है. It has broken with the body, and then if you look at this top one, or this will be your low for this particular structure, and this will be your high, right? The minute a candle gets above your high, or what high? We call it as swing high. ये क्या है? 4 घंटे का है, right? 4 hour swing high. The minute it gets above that swing high, you get above that swing high. If it is for the first time, you can call it as a change of character. If it is an internal structure, now इसको internal क्यों बोल रहे हैं? Because we are looking at the 4 hour. This is a 4 hour swing high, but this will be an internal structure for your daily chart, right? Now यहाँ पर 4 घंटे की swing है, but this swing high is not your daily swing high. Your daily swing high is something else, right? Now, if you look in the daily part, what is this? It kept falling. It just continuously, it continuously fell. Finally, यहाँ तक आने के बाद body के साथ break हुआ है. So that is a break of structure on the daily, right? इसका high जो है, maybe let's take this one as the high. It came all the way. This is the low, break of structure. This is the low. It broke again, right? Yeah, here also with the wick. That's with the wick. So I will not take that in. This will be my lowest low, and this is going to be my highest high. If you are looking at the daily, this is my swing high on what?
on the daily time frame. But ये डेली टाइम फ्रेम में जो है हाई है, इस ये ब्रेक हुए तक वेट करना बोलते, यू आर लिटरली वेटिंग फॉर close to 15 days. No one would like to sit idle for 15 days. You definitely want to know where is the low, right? उसके लिए we get into the 4 hour. Now 4 hour में आए तो, right, you remember if this is your daily swing high, right, you want that to be broken, to be bullish on the daily. But I don't know if you have heard this or not. Trading में price is fractal. जब कोई fractal बोलता है, that means a same pattern will be forming in the lower time frame, or a pattern which forms, or a thing which happens at the higher time frame, a similar thing will happen at the lower time frame, right? So that's fractal. ये देख, ये अपना एक दिन का, this one is our daily swing high, right? Now that daily swing high break होने से पहले we want to know ये कहाँ पर पहले कहाँ पर लो फॉर्म कर सकता है बोल के. That's our daily swing low, and this is our daily swing this is our daily swing high, and this is our daily swing low. ये daily swing low, as long as this low is not broken, as like just now we were talking, right? The लो की काम क्या है, यहां पर अगर लो बनाया तो इस लो की काम क्या है, हाई को टेक it has to break above the high, right? Same thing, but it did not break, it came lower than this one. Now let's, instead of epic pen, maybe Abigail, we should get an annotating tool. Oh, epic pen, yeah, I'll get that. Okay, यहाँ से high, low, high, low, high, low. What is it? The purpose of this low is to break this high. It seems like it has broken, but the purpose of this high is to break this low. Yes, it definitely did break. The purpose of this low is to break this high. It has broken. Now this is our strong low hai. This is our weak high hai. Because this is broken, you call it as a weak high. Because this is not broken yet, we call it as a strong low. Now the purpose of the next high, जो भी बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, right? Because this is broken, this is a weak high, right? This, if this has to stay as a weak high, and if this has to stay as a weak low, this weak high should not break the weak low, should not break the low, right? You try, ये wording जो है थोड़ा confusing रहेगा. जब पहली बार मैं भी सुना था फोटोन ट्रेडर को, मैं भी बहुत कंफ्यूज हुआ था, राइट? फॉरगेट अबाउट इट. हाई का काम जो है वो लो ब्रेक करना है, लो का काम जो है वो हाई ब्रेक करना है. अगर हाई लो को ब्रेक नहीं करता है, जिस लो ब्रेक नहीं हुआ है उसको हम वीक लो स्ट्रॉन्ग लो बोलते हैं. ये लो अगर हाई को ब्रेक करता है, दैट हाई विल बिकम ए वीक हाई, राइट? Now in this example, if we look at this particular low has taken out this high, right? And then it tried to come down. इसका काम क्या है? इसको ब्रेक करना है, ये लो को ब्रेक करना है, ये लो को वीक बना देना है, right? It's a war है. मैं ये कहीं पढ़ रहा था. The screen what you see in front of you, the chart what you see in front of you is a battlefield. ये red candle is an army and green candles is another army. ये दो लड़ रहे हैं. ये जो wicks है ना, these wicks are the lost battlefield or lost battleground. That means this green candle tried to go up, did not, it went up to this part, but had to return back because it was beaten by the red candle. Now this red candle has a longer upper wick. That means this green candle tried to get above it,
but again it was beaten there. It was beaten and came down. It's interesting. अगर आपकी perspective में देखे तो it is actually एक perspective में that is actually right. Now in this entire screen, what is it? In this downtrend means nothing but the red is winning, which is nothing but the downtrend, right? Which is nothing but the lower highs and lower lows. It all ये टर्मिनोलॉजी जो है कोई भी कुछ भी बोल सकता है यार. ब्रेकअप स्ट्रक्चर बोल सकता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल सकता है, स्विंग हाई बोल सकता है, और स्ट्रॉन्ग हाई, वीक हाई, जो भी बोलना है बोल ले, बट गेट द कॉन्सेप्ट राइट. कॉन्सेप्ट इज सिंपल. कॉन्सेप्ट इज सिंपल. मार्केट स्ट्रक्चर की कॉन्सेप्ट जो है इट इज सिंपल. मार्केट कैन ऑलवेज डू ओनली थ्री थिंग्स, आइदर हाई, आइदर लो, आइदर अप और डाउन और साइडवेज. नाउ ये जो एरिया है ये साइडवेज है. ये साइडवेज होने के बाद इज इट गोइंग टू गो अप और इज इट गोइंग टू कम डाउन? हाउ आर यू गोइंग टू कम टू योर कंक्लूजन? दैट इज बेस्ड ऑन योर swing structure or internal structure. Apna swing structure, this is on the day. These two darker blue lines are daily swing high and daily swing low. Your 4-hour swing high जो है ये यहाँ तक आके, what is it? In the 4 hours, this is multi-time frame है. In the 4 hours, it tried to come down, and here the 4-hour swing high has broken, so you can take this as change of character on the 4 hour. Now, why do you take it as change of character? Because it has broken above. Now, what is the purpose of the high? It has to break the low. Now, because it did not break the low, it went up. That means it has turned its course. ये trend reversal हो गया, right? Now, what else, Avigal? What else we have to talk in here? I don't know. कुछ भी बोलते ही गया मैंने. Avigal. राम भाई अकेले अकेले क्या कर रहे हो ये बताओ. अरे अकेले नहीं हूँ यार मैं. कौन है देखो. अच्छा, यहाँ पर अविगल था, वो भाग गया. रोहित भाई कैसे हो? आई एम एक्चुअली गिविंग दैट टीए सेशन, वो यूट्यूब पे है, एंड आई वाज अज्यूमिंग कि ओके, आई डोंट नो. Alright, let me finish the stream. ये बहुत टाइम बोला है मैंने. I don't know how long it went. We'll do it again if anyone is there. Hang on, मैं स्टूडियो में जाके देखता हूँ एक बार. हाँ, no. Yeah, oh. Right. Rajesh bhai, sorry. I wasn't looking at the messages. हाँ रोहित भाई, आई वॉज डूइंग दिस यूट्यूब. ये नया है मेरा, ये क्या लगा दिया यार ये लोग मेरे को. ओके, बट दिस इज गुड. दिस इज गुड. एक सजेस्ट करूं, कुछ सजेस्ट करूं. हाँ सर, उस ग्रुप में आके करो, कन्वर्सेशन अच्छी हो जाएगी. अच्छा, या हाँ. ओके, लेट मी जॉइन टेलीग्राम ओवर देयर गाइस. या Rajesh bhai, procrastinator bhai, I'm joining the Telegram. यस सर. गाइस जो भी यूट्यूब पे है, आई एम ऑन कॉइन फादर्स देयर. Evil भाई, best man is in here. Okay. Alright, Rohit भाई, thanks. Yeah. मैं क्या इधर पहले आके इधर मैसेज डाला एंड नो वन वाज रिस्पॉन्डिंग, सो वी थॉट वी विल डू दिस लाइव स्ट्रीम. हमारा वीकली एनालिसिस करने के लिए बैठे थे, एंड देन या पता नहीं क्या हुआ, बाय मिस्टेक इधर टाइम स्लॉट पिन कर दिया करो तो सभी तैयार रहेंगे.
It's anyway on YouTube. Those who did not come in, they can always go back and watch, join. Okay. हम लोग एक चैनल शुरू किया है और उसी के लिए कंप्यूटर भी लिया, लैपटॉप भी लिया नया मैंने. Beautiful laptop and loving it actually. क्या है? Cyborg, MSI Cyborg with GeForce, NVIDIA Okay. GeForce GPU, i7 processor मस्त है भाई. I'm loving this thing. भाई लोग कोई आके बात करो, मुझे ये आदत नहीं है. It feels like I'm speaking to myself. Speaking to myself is a very bad thing. नहीं, हाँ इधर कर सकते हैं, इधर अच्छे लोग हो जाते हैं तो इधर कर सकते हैं कन्वर्सेशन. आप लिंक ड्रॉप कर दो. अभी Link. स्क्रीन पे हो, Yep. लिंक ड्रॉप कर दो एक बार, हम भी देख. दिख रहा है भाई. Is this the one? Yep. We thought of doing. कंटिन्यू करो भाई, कंटिन्यू करो. देख रहा हूँ. I even forgot where I was. कैसा लग रहा है मेरे को पहले ये बता. हाँ, कंटिन्यू कर सकते हैं. बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया. बहुत बात जो कर रियल सकते बात है वही बोल रहे हो आप. यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है. हैं. अब रोहित मारेगा मेरे को. नहीं ठीक है. नहीं, बढ़िया. Okay. Anyone else? Yes. Who was that? Best man. आपको बोली. did you वो मेरा हिंदी अच्छा नहीं रहता है. That's the only problem. और when I speak a little bit fast. वो समझ में आ रहा है क्या? हाँ हाँ, बढ़िया से समझ में आ रहा है. मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, बाकी भाइयों को पूछिए. Okay, that's good. That's good. Now let's get back. Right? Where were we? We were looking at the market structure. It's the same यार. It's the same. कोई भी asset ले ले. I trade gold. I trade forex. I trade stocks. I trade crypto. कोई भी asset ले ले, it's the same. You first get into just like BTC. You first get into the higher time frame, then everything will fall in line, right? ये वाला was the best thing. This is the best example I can give you. क्यों बोलते हो तुम लोग क्रिप्टो फॉलो करते हो? अब BTC में ये एक लाइन will explain the whole thing, right? अब यहाँ से ऊपर जाने दो, नीचे जाने दो, हमें कुछ मतलब ही नहीं है. फंडामेंटल देखना है तो यू ऑल्सो हैव टू लुक एट ये क्या है. लाइक इन एन ईयर हाउ मेनी क्वार्टर्स डू यू हैव? 4 क्वार्टर्स. आज से टुडे इज 1st of October, राइट? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने लास्ट क्वार्टर है. कल तक यूजुअली द लास्ट वीक ऑफ ए क्वार्टर विल बी वेरी बैड. जब बिटकॉइन लास्ट वीक ऑफ द क्वार्टर बैड नहीं गया तो it is a good sign. It is a good sign, right? Now let's not get too much ahead. Instead of that, ये क्वार्टर में क्या हो सकता है, right? For that you need last 3 quarters. Again is the same market structure, right? Now if you look at this, what is this? 2 क्वार्टर ऊपर गया, 1 क्वार्टर नीचे आया. क्यों? We were just talking about that power of 3, right? It's the same thing. Any candle doesn't matter. It has to do this, right? It needs to start somewhere, come down, go up, then come down and finish. Right? Now, 1, 2, 3, and this is the 4th candle. What is the 4th candle? All these 4 candles, this is 3 months. Each candle is 3 months, right? These 4 means it is power of 3 again. It is an year. If remove this, delete. Okay, if I have to make it as 12 months, you see. Okay,
can you say this? Key, this particular candle, it went up trying to come down, right? Now you have a wick there, but you don't have a bottom wick. Okay, for me वो बहुत डर लगता है. Let's not do that. And also, अगर इसको देखना है तो can you also, usually I don't consider a wick in crypto. Crypto में बहुत wicks मारते हैं. So even if you just have to take the body, और इसमें ये body से last year, always look at your history, right? ये body से ये body तक लेके इसको I'm giving a fib. I'm giving a fib. And what is that fib? That fib is my 50% Fibonacci. हम 9th 10th क्लास में पढ़े थे, right? Fibonacci rules जो है मैथ में, ये this particular fib has got only 3 levels, 0, 100 and 50. I'm just taking the 50% of it. Now if we have to go back to monthly, what is that 50% coming to? Isn't it coming to this one? अब बताओ मेरे को, without looking at the market structure, can you take profits there? Right? Now fib के ऊपर some people क्या है? Some people, they don't do anything. यहाँ से यहाँ तक आए तक कुछ नहीं करते. ये break करने के बाद, that means they will wait for something like this to happen. ये अब कहाँ है? यहाँ है ना. यहाँ से यहाँ तक आके मे बी थोड़ा ऊपर जाके इधर आके रीटेस्ट करके देन ऊपर जाने के लिए ट्राई करते हैं, राइट? they only trade spot. You don't need to get into leverage. तुम लोग, you don't even have no ABCDs of leverage. I'll tell you that for sure. Maybe एक दो लोग रहेंगे आपके हमारे ग्रुप में, but we should never ever be doing a leverage trade. Leverage trade बहुत गंदी आदत है. तुम लोग तो leverage trade अभी करो ही नको. At least till you understand leverage, till you understand the market structure. ये market structure है, as simple as this. ये क्या है? I did not draw any swing high, swing low either. You remember this orange line? This was our what? Weekly chart पे whichever area has been hit the most, वहाँ पर एक line डाला, then आके 12 month पे, which is an yearly, previous year का 50% लिया है. Previous year का 50% आके it's trying to come down, but it is holding up pretty well here. As long as it stays below this, it is bearish. It is only for some people. I'm not saying that this is going to be bearish or this is going to be bullish, right? Some people only wait for this to come up, then do a retest of that 50% of last year and then go up. तब trade ले सकते हो. You don't need to for making money, you don't really need to get right at the bottom. ये यहाँ पर लेने की, यहाँ पर खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है. You can miss 5 or 10% of the move. You get the major, you try to make the most out of the move. That's what I'm trying to say. You see, ये इधर आके, like in after Bitcoin reaching that 65,000, whatever the price was, right? ये सारे गिरने के बाद, how many people do you think have bought here? Or a real trader? Maybe people like you and me might have bought it, right? By looking at whatever our gurus जो भी बोले होंगे वो लेके और whatever analysis वो करके हम खरीदे होंगे. But the real big players, where do you think they are going to buy? They are not going to buy it here. They are not going to buy it here. They'll wait for the structure to form. And first of all, they are not going to sit in front of a computer and when they have to put in $1 million और 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ लगाना है तो वो कंप्यूटर के सामने बैठ के अपने जैसा बाइनेंस खोल के नहीं खरीदते वो लोगों के पास ऑटोमेटेड algorithms रहते हैं and those algorithm को start कर देते हैं and that algorithm will buy for them. Now वो algorithm क्या करेगा? ये सब देखेगा. ये सब देखे, it will definitely not buy from here. It will wait for the confirmation of the market structure and it will take this major chunk of the move, this 60% move. ये अब यहाँ से यहाँ तक, if it is a 134% move, they don't give a fuck about it. वो बिल्कुल नहीं देखते. You only need 50% of the move
You don't need an entire move. So stop catching knives. Okay, let's get back into our structure. On the daily. Okay, how do you or where do you start looking the structure from? अगर हमें स्विंग हाई और स्विंग लो की लाइन ड्रॉ ही करना है तो कहाँ से देखेंगे हम? I would do, the way I do is, I would do it from the most recent leg. अब ये पर्टिकुलर चार्ट को देखें तो इसमें मोस्ट रिसेंटली क्या है? इंस्टेड ऑफ it's better to start it from the highest level or highest time frame, which would most probably be monthly. Now remember that power of 3, ये हर जगह हर समय every time frame में वो power of 3 याद रख लेना. If you're going to take a trade and if the trade is now, look for what the time is now. अगर तुम लोगों को buy करना है तो वो, if let's say we are on the hourly chart, right? यहाँ आने के बाद you wait for you look at the time, and if it is the starting of the hour or starting of the time frame, अगर आप लोग 4 घंटे के टाइम देख रहे हो तो if it is the first 15 minutes of that 4 hours, ये कहाँ दिखेगा? ये आपको what is it? इधर left side में, because this is closed it will not show you there. Hey. अच्छा, मेरा ट्रेडिंग व्यू को कुछ हुआ है यार. It is a premium one, but I don't know why. That's behaving funny. Scales, trading, place on instant orders, position, execution. यहाँ पर टाइम भी नहीं आ रहा है, मुझे याद नहीं है कहाँ रहता है बोल के. Events, ideas and chat outline. It's okay. It's okay. Yeah. Look at the time. So in our market structure, if you're going to start your drawing the line, or if you're going to start your this thing, look for the swing highs and swing lows, you start from the most recent leg. अब इसमें देखें तो ये क्या है? This is the down leg, most recent, and this is where it started moving up. That's what we want to know. That is all what we want to know. Or now, what is it? If it is going to go up, to what level this can go up, right? So if you want to know, or what is it? We just now talked about it, right? The basic purpose of a high is to break its previous low, and the basic purpose of a low is to break its previous high. So इसमें, if we assume that this is the low, what is its high? How do you know that, right? उसके लिए ये structure कहाँ break हुआ है देखना है हमें. Okay, for that let's understand something else. What is this? Let's try to read each and every candle. यहाँ से ये green candle जो है ये एक high बनाया, then the next candle broke this. आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो? मैं, हाँ भाई, वो YouTube पे आ रहा है देखना. दिख नहीं रहा है. यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर तो अच्छा हो जाएगा ना समझाने में. नहीं, देख यही रहेगा. यहाँ पर स्क्रीन शेयर करे तो बार बार वही बोलना पड़ेगा. अगर कुछ मिस हुए तो you can go back there and look at that again. अच्छा, तो लिंक कौन सा है? यही है, ऊपर है, देख ले भाई. Yeah, the most recent one. Right, okay. यहाँ पर, what is it? This particular one is the high, you can say, or the previous candle high, and this one, this current candle has broken the previous one, right? In the same way, let's keep looking at it. We want to understand the current structure, right? This one has broken the previous low, this one has broken the previous low, this also broken the previous low, this also broken the previous low, this also broken the previous low, but this did not break the previous low. Now, does that mean that it has went up? What I'm trying to do here is I'm trying to understand the flow. ये कहाँ से जा रहा है, कहाँ से
नीचे जा रहा है, कहाँ ऊपर जा रहा है, और फिर कंटिन्यूएशन कहाँ से आ रहा है बोल के. दिस वॉज द हाइएस्ट पॉइंट. नो कैंडल, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, none of these candles have went up except this one thoda, or maybe an equal high बनाया होगा इसको. If you look at it closely, we don't want to get into so minute details, we want to understand the flow. यहाँ तक, right, क्या हुआ, नीचे आया, then it tried, this candle did not break its this low, but it neither broke its high, that means it did not go high. ये अगर line chart करना है तो we can't do this one, right? You can take it up there. Okay, that's what we want to figure out, so that we can have our swing high and swing low, right? यहाँ तक आया, then what happened? This one did not break the low. This is an inside candle बोलते हैं. जो भी candle उसका high or its low, if they do not break the previous candle high or low, you call it as an inside candle. Inside bar बोलते हैं इसको, right? Inside bar has very very big importance. We can talk about it in some other day. Today let's only concentrate on the structure, right? This one broke its let's assume now for now that कि ये inside bar को ignore कर देती है, right? This is also still low. This one, it broke the low, but yeah, kind of it broke the high. Then the very next bar, or you can simply say that this tried to go up, but it is a break structure, right? You can simply draw this, right? Came down, right? And this is also an inside bar, if you see that, right? That means came down. यहाँ तक गिरते आया. यहाँ तक आने के बाद क्या हुआ, right? Now in this, if you try to have a look, can't you say, instead of saying can you say, can't you simply say, अरे यार वो पहले लाइन ड्रॉ कर लेंगे कि this is a kind of a breakup structure. This is not technically right, but just so that you people understand, I'm making it like that. Okay, ये structure अब, right, गिरते आया, then try to go up, but straight away went and came down. So can't we say that this is the swing low and this is the swing high and this is this breakup structure? अब इसको swing high क्यों लिया है मैंने? Okay, let's clear this off. I'm saying कि ये swing high है, okay, और ये swing low है, right? और ये breakup structure है. Okay, here is a rule of thumb which I follow. Yes, Aman bhai, thank you. What is it? ये if you look at this particular candle, right? Let's write it so that, what is this, monthly time frame पे है, MINTHY swing high. We'll put it on the top. Okay, ये लिख लेना. I'm going to say something very very important. Monthly swing low. Okay, and इसको मैं breakup structure बोल रहा हूँ. क्यों? Can you say that? We just now drew a line, right? It came all the way, right? यहाँ आके, then came down. Which one was that? Yeah, it was this one. Not this, but it was this. I will make a playlist. थोड़ा फुर्सत नहीं मिलती यार. Whenever I get time, I'll do that. We will do that, not just me. I alone cannot do that. My Abigail, Carrie, Ninja सब मिलके will make that a playlist and यहीं पर लगा देते हैं, so that you guys don't need to go anywhere or ask anyone. Whenever you guys are free, you can watch it. Right now, what is that? We drew that, right? I think
you guys understood it, or if not, let's do a replay of this whole thing. I'll take it candle by candle. इसको play करेंगे at a speed of 1. Right, now if you look at this candle, this is a monthly candle. It's forming, it's yet to form. वो क्या है, ऊपर नीचे हो रहा है, वही पावर ऑफ 3 हो रहा है. पहले नीचे आया, देन ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर गया. It is going to do all the drama, right? And then came down and stopped it. Now if you look at it, this low was taken out by this low, so it is in a downtrend for me for now. Why are we taking this? Because we just talked about it कि recent leg को देखेंगे. अगर हमें current swing structure पकड़ना है तो you can start all the way from the beginning of the chart, but that's no point. मेरे experience से बोल रहा हूँ मैं, beginning of the chart से देखना, you get lost sometimes. कभी कभी mistakes कर देते हैं और wrong swing structure पकड़ते हैं. What I figured out or what I understood कि if you do this most recent leg, you will get a proper swing structure, right? And this has helped me a lot. This has helped us a lot. बहुत help किया है. Right, now what is it? This has broken the previous candle low and its previous candle's high has been intact. अभी बात कर रहे थे हम लोग, low high has to take out the previous low. This is power of 3, right? वो हो रहा है अब. Let's go ahead. Let's play that. Let's play that. Okay, कुछ ज़्यादा ही slow हो गया ये. Let's increase the speed a little. इसको 2x कर देंगे और 3x सही है. Right, what is this doing? If you try to see, it tried. अब अभी रेड है, इससे थोड़ी 1 सेकंड पहले वो क्या ग्रीन था. दैट मीन्स जहां से स्टार्ट हुआ है उससे ऊपर जाने की कोशिश करके देन नीचे आया. नो, ऊपर जाने की कोशिश नको बोलो उसको बोलो कि इट इज ट्राइंग टू फॉर्म ए टॉप विक. A very, very important statement which I am going to make, and I want all of you to note it down or keep it in your brain. ये याद नहीं रहेगा. A trader's fate, जिस बंदे ने, ट्रेडर कौन है? बंदा जो $5 डाले हो या $10 डाले हो या ₹5 डाले हो, right? मार्केट में if you have put in any money, you are a trader. Doesn't matter how much you put in. It doesn't need to be millions of dollars, right? A trader's fate will be decided by what he does in the wick of a candle. ये जब टॉप विक बन रहा है, यहाँ से अगर तू लॉन्ग करे तो you are going to be fucked. या टॉप विक बनने से पहले लॉन्ग करे तो you will be fucked. बॉटम विक बने जब, when it is forming a bottom wick, if you are going to short this, you are going to be fucked, right? So a trader's fate is going to be decided what they are going to do in the wick of a candle. Yeah, just now I was saying कि when you are going to take a trade, वो particular time frame में what time of the candle are you in, वो देख लेना. Is it forming a top wick or a bottom wick, right? कौन सी stage पे है वो देख लेना. That's how you have to enter into a trade. बाकी के सारे बाद में, पहले वो टाइम देखो. वो तुम लोग, you might have done all your analysis, but still you will get a better entry when what you do if you look at the time. Now let's continue. Let's play this. What is it doing? It's still doing that. It's still coming down. It's still in a downtrend because it's, what is it? Its low is being taken out, high is being protected. यहाँ पर थोड़ा आया है. Let's not get too technical and too exact. Try to be too exactly right. ये monthly time frame है, right? We are trying to understand कि ये नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है, और what is the current trend. इसका ट्रेंड अभी तक क्या है? Every candle's low has been taken out. That itself says that it is bearish, right? Each candle tells a story, yaar. Any person who takes a trade here, right, ये पूरा ट्रेड मिस करके भी यहाँ पर ट्रेड ले सकती है और इसका stop loss इसके ऊपर रख सकती है. That's a different story. That's for traditional markets. It do not work in crypto.
ट्रेडिशनल मार्केट्स में कुछ ज़्यादा पैसे रहते हैं, यू कैनॉट मैनिपुलेट. क्रिप्टो में अलग है, यू डोंट put your stop losses above the wicks in crypto. You will be fucked. Your stop loss hit ho jayega. Okay, what is it? We are still in a downtrend. We want to see when it's going to do that. Break the high. It's every low is being broken now. We want to wait for a high to be broken. Right? It's still forming. It's still trying to do that. And ये break होने से पहले, what is it? Okay, now we have got a high here, and then this is broken. ये break होने से पहले, ये monthly swing high से पहले, इससे पहले monthly swing high नहीं रहता है क्या? Definitely रहेगा. ये रहेगा अपने monthly swing high. This would be our monthly swing high for some reasons. Yeah, you can, okay, to avoid confusion, let's take as the highest point. This is our monthly swing high, and we want to come a bit lower now, right? We want to we are trying to find it out for the current what do you say, current trend, right? Now what is it? यहाँ तक आया. अब यहाँ से ये लो ब्रेक किया है, देन हाई भी ब्रेक किया है. हाई ब्रेक करके फिर नीचे आया. That means the trend was, the order flow was like this, right? It came here, went up and came down. Okay. Now, in this, the reason why I say this is my monthly swing high key, because this low was broken by a body, not the wick. When you see a body being broken, you look for the low of the board of the candle which has broken, and you try and draw a line right above it. If यहाँ पर break हुए तो, right, this is more easier to understand. Let's assume that this wick has, this particular candle has broken the structure here. अगर यहाँ पर body से assume that this wick is not there, right, यहाँ पर break हुए तो the highest point in between the swing low and the broken candle, the swing or the wick of the candle which was broken and the body of the candle which is broken, ये दो candles के बीच में highest point जो रहता है वो swing है ये, right? Now in here, in this example, ये अपना example नहीं है, just तुम लोगों को समझाने के लिए, इसमें this is my monthly swing high, but here what is it? What is the highest point? ये candle और ये candle के बीच में this is the highest point, so that will be my swing high. Let's continue with our play. It's still coming down. It went up, came down, right? ये VIX जो है, that's so very important, man. Okay, अभी भी नीचे आ रहा है. That's still my swing low, right? We want to know, I mean swing high है. We want to know the swing low, and then उसके बाद we want to get into the weekly. Harinder bhai, it is on YouTube. Yeah, that's why we are doing on YouTube. Yeah, upload, download ये सब मुझसे नहीं होता है, बैठ कर नहीं कर सकता हूँ मैं. Okay, what is it? यहाँ तक आया. यहाँ तक आने के बाद, when the purpose of this low is to make a high again. अब ये high next higher high रहेगा या lower high रहेगा हमें पता नहीं, right? For that reason, we want to, okay, ये करने दो इसको जो करना है, और थोड़ा फास्ट करे तो maybe it will be better. Okay, यहाँ तक आने के बाद क्या हुआ? What is happening? नहीं, क्या हुआ नहीं, क्या हो रहा है, right? It came down, right? This is still a low, right? And this is an inside bar. It did not break this red candle's high did not take out the green candle's high, so it's still in a downtrend. This is still in a downtrend. यहाँ तक downtrend होने के बाद, if you now try to see, okay, if you now try to see, right, this is an inside bar, right? Now after this low, this green candle's low did not take out the previous green candle's low, or in neither it took out the
inside bar nor the swing low. That means यहाँ पर कुछ तो हो रहा है. What is that कुछ तो क्या हो रहा है यहाँ पर? If you try to see this candle took out, not only did not take out the previous candle low, but took out the previous candle's high also. अब ये monthly से let's jump into weekly. यहाँ आके देखो, right? This is multi-time frame, or we can even do this. No, I think it will confuse you. Arey, I've got a premium one. Why does it keep saying that? What the fuck? है ये देखो, यहाँ पर आ रहा है, but that's strange. That's fine. Settings, templates. What is that? Ashita is my daughter's name. No one is going to assume anything wrong. Apply to all. Okay. Maybe this will confuse, so let's stick to this one itself. Single chart ही, और single chart रहे तो अच्छा दिखेगा. What is this? अब monthly time frame में this kept going up, right? But weekly में आके देखे तो you have got the swing low. That's our monthly swing low है. यहाँ आने के बाद this low wasn't taken out by this candle, but its high was taken out. That means it has started a uptrend. Now ये uptrend कहाँ तक जा सकता है? It can do, what is that it can do? It can go here, do this, come down here, go up, and then come down here, go up, come down here, do this, right? It can all the way come down here and still go up and do this. You remember this. What I'm trying to say is, now how do I put this in words यार? हाँ, पेपर पे लिखना है बोले तो a bullish flow देखना है तो a higher high and a higher low बनेगा, right? So पेपर पे लिखना है तो this is a higher high and a higher low. How many times do you see something like this? मार्केट में ऐसा कितने बार देखने को मिलेगा अपने को? Not many times. Your actual structure is going to be like this. ये right. Okay. उससे पहले this is what we were talking about. This will be our breakup structure. Then यहाँ आके this low is taken out. This is our breakup structure, right? This is our high. A higher low, ये low से ये high है. This was supposed to come below this low, but it did not, and that's why you call this as a strong low. That low is a protected low, right? यहाँ से then it went up. Because it went up, breaking this low, which became a weak low, we call it as a breakup structure, right? ये breakup structure जो है, हम यहाँ monthly में इसको breakup structure बनाए थे, right? ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद ये हायर हाई बनने के बाद व्हाट एल्स इट कैन डू, और राइट दिस नेक्स्ट लेग जो है इट इज नॉट गोइंग टू बी दिस सिंपल, इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस. कहाँ तक जा सकता है ये, और टिल व्हाट इट कैन डू, इट कैन कम अप डाउन यहाँ तक जाके फिर नीचे आके it is not going to break this low, because this is, we are assuming that this is a strong low in an uptrend, right? Then जाके इधर आके then another low बना के then यहाँ तक जा सकता है, right? This can happen. This is what is going to happen. पेपर पे ऐसा easy चार्ट बना ले सकते हैं, मगर एक्चुअल में ऐसा बनेगा, which is nothing but what we are seeing here. This is an important one, right? It's always going to be like this in an utopian way. What is it? A straightforward higher high, higher low banega. But reality में it's never going to be like this. It's always going to be like this.
ये तुम्हें इतना बेजा खा के ऊपर जाएगा ना, वी विल बी गिविंग इट अप. ओके, इधर देखो क्या हुआ. इट केम डाउन, right? This candle has taken this one out. Then the next candle has taken the low of the previous candle. This is supposed to be bullish. It doesn't matter. The color of the candle doesn't matter. It might be red or green. It doesn't matter for me, at least. I don't care if it is red or green. I only look at what that candle has actually done, because ये weekly में red है, मगर daily में, weekly में कितने दिन रहते हैं? In a traditional market, you have 5 days. बट डेली में जाके देखे तो दैट माइट हैव हैड 4 ग्रीन डेज. एक ही रेड डे होगा probably, right? Okay, so I don't really care if it is red or green. I will see what it actually has done. Now क्या किया है ये? It has taken out the high of the previous candle, did not break the low of the previous candle, but this particular candle has taken the low of the previous candle and did not break the high. That means it went up and came down and then again trying to go up. This next candle has taken this out. For me, idhar aake, ab, what was that? We were in monthly. Monthly mein, this was our breakup structure. This is our monthly swing high. This is our monthly swing low. In weekly, this is the trend what you want to look into, right? Ye week mein agar trade kare to, ये वीक में आर यू गोइंग टू बी, बिकॉज दिस हैज बीन बेरिश, आर यू गोइंग टू बी बेरिश? नो, डेफिनेटली नॉट. यू आर गोइंग टू लुक इनटू दिस स्ट्रक्चर. व्हाट इज इट? वीकली में मंथली का मोस्ट रीसेंट लेग देख रहे थे, राइट? उसमें वीकली आके देन रीसेंट लेग देखो. ये रीसेंट लेग में हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू. दिस इज अ गुड एग्जांपल. बाय मिस्टेक आया, मगर बहुत अच्छा एग्जांपल आया इधर, राइट? हियर एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर. दिस इज द वीकली. लेट्स गिव इट अ डिफरेंट कलर सो दैट वी डोंट गेट कंफ्यूज्ड. इसको ब्लैक कर देंगे, right? That is a breakup structure. You can say this is a breakup structure. You can say this is a breakup structure. You can say this is a breakup structure. Can say nahi, chalo isko ye weekly aaya, so let's not take it as a breakup structure because I said it, right? Ye bhi weekly hai, so let's not call it as a breakup structure. There is something else called as change of character. Ye breakup structure hai. Okay, now in this most recent leg of this monthly leg, क्या है? दिस होल थिंग इज अ मंथली लेग एंड उसमें ये वीकली लेग है. वीकली लेग में ये मोस्ट रिसेंट लेग है एंड ये मोस्ट रिसेंट लेग में व्हाट इज दिस? कांट यू से दैट दिस इज योर वीकली स्विंग हाई? I hope you are following me. If you're not following, it's your bad luck. Weekly swing high, right? And what was this? Weekly breakup structure. बॉस लिख देंगे बॉटम सेंटर. ओके, ब्लैक में जो है वो वीकली है. नाउ कांट यू से दैट? कांट यू? नहीं, दिस इज, देखे तो दिस इज आर व्हाट्स रॉन्ग, राइट? वीकली swing low. Let's try to write it in the bottom. Our monthly swing low and weekly swing low both भी same है. क्यों? monthly swing low यही रहेगा, weekly swing low यहाँ से next week, अरे रीसाउंड आ रहा है मेरे को. weekly swing low यहाँ से we will be changing it soon. Okay, now this is the swing high. What is the purpose of doing it like this? Now monthly downtrend हो गया है. This says that our weekly chart says that ये monthly downtrend हो खत्म होके ये uptrend शुरू हुआ है. Now this uptrend, what is it? The purpose of this monthly swing low का, ये इतने downtrend जो था, ये low का काम क्या है? इसको ब्रेक करना है, राइट? इसको वीकली स्विंग हाई बोलने से अच्छा इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलो. या इट डजंट नीड टू बी चेंज ऑफ कैरेक्टर. चेंज ऑफ कैरेक्टर, व्हाट इज द चेंज ऑफ कैरेक्टर? द फर्स्ट ट्रेंड चेंज. देख, ये वर्डिंग्स थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा. हम स्विंग स्ट्रक्चर में है,
विच इज द मेजर स्ट्रक्चर. अब जो सब स्ट्रक्चर जो है दैट इज द वीकली स्ट्रक्चर. सब स्ट्रक्चर में फर्स्ट शिफ्ट जो रहता है, बोल तो बेरिश से बुलिश जब फर्स्ट शिफ्ट होता है उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल सकते हो. और मार्केट स्ट्रक्चर, व्हाट इज इट, इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक बोल सकते, कोई भी नाम दे दे, इट डजंट मैटर. आई लर्न दिस फ्रॉम फोटोन ट्रेडिंग, इसलिए मैं भी चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलता हूँ. मेरे को अच्छा लगा, तुम्हें जो नाम अच्छा लगता है वो दे दे. जस्ट से दैट ये मंथली बेरिश से बुलिश शुरू हुआ है, राइट. दैट डजंट मीन दैट इज गोइंग टू गो ऑल द वे एंड मेक ए न्यू ऑल टाइम हाई. इट माइट जस्ट डू दिस. यहाँ क्या हुआ है, यहाँ तक आया, देन केम डाउन, यहाँ आया, देन केम डाउन, एंड देन इधर जाएगा. Probably is going to make a low from here. You never know. You never know. How are you going to come to know about this? Because we are in weekly. You draw it down to daily. Then you take it down to 4 hours. Then you take it down to 1 hour. You never go below 1 hour. 1 hour से नीचे जाना बेकार है. Most of my trades are based on 4 hours and 1 hours. Okay, we'll talk about that some other time, right? This is your market structure. This is how you come into a conclusion कि अब कोई भी एसेट पेयर होने दो, वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. अरे यार, ब्लडी इट्स 11 fucking 30. 2 घंटे से बोल रहा हूं यार मैं. होली फक, बहुत हो गया आज के लिए. मुझे कल नौकरी पे जाना है, नहीं तो भगा देंगे मेरे को. ओके, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप दिस. Let me stop streaming.